Okay. Um, so this is our first session in a CKD series. So I just wanted to start. Recording in progress. I want to start this session with saying by praying a God, Ganpati Bappa Moria, and let's start. We are going to start with this CKD session, and we are going to have a lot of fun. Just one request. Recording No, in progress. please go on mute if you are not. I don't see option to mute all of them. But Hello. yes. Good evening, everyone. Good evening. Yeah, I'm going to put Good evening. all of you on mute for some time. Okay. Yeah. So this is going to be first session, and in the CKD series, so we are going to have this 2 hours long session. आज भी होगा, कल भी होगा, uh, on Sunday and Saturday, Sunday, both the days. Okay. I hope you have gone through the Ask Me Anything session. Ask Me Anything session we have already covered a lot of repetitive questions, so make sure you go through the recording. I'll share the Ask Me Anything video session in our group as well. Okay. And if you have any questions, just drop in the chat. So I'll take all those questions in sometime later. Okay. Yeah. Are you excited? Voice is very low. अभी आ रहा है मेरी आवाज? Hey, no worries. If someone is going to miss this session, I'm recording, so I'll upload on our platform. Graphy pe, you will see the recording again. Okay. Yeah. Okay. Good. If you want to share the link with your friend, you can share the Zoom link. They can join here. Yeah. Yes, we are going to make a lot of real-time projects. Let's see. I just want to set a base because we have people from different backgrounds. Which students is some of the students are also here in this class, and some people are from different background. They don't know anything about Kubernetes Docker. So if I jump directly to the Kubernetes, it will be very hard for them to understand the concept. Yeah, you might have noticed I sent one मैसेज इन अ ग्रुप टुडे मॉर्निंग एंड बहुत से लोगों को they started asking what's the today session is about. If people understand the Docker Kubernetes, they might have understood the meme as well. Yeah, Hindi plus English रहेगा. So I try to keep it English. मुझे भी हिंदी सीखना है, मेरी हिंदी अच्छा होना चाहिए. And yeah, let's start. So that's one reason we are going to have this fun session, CKD session होने वाला है. And I hope by the end of this session आपको at least Docker और Kubernetes के memes तो अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है? Okay. So let me check group once. So if someone else is facing the problem, we'll try to solve it. Yeah, लोगों को same. Are you not able to hear? Hey, am I audible? Okay, great. So किसी एक का ही problem होगा. Let me start.
start sharing my screen and we'll start with window. 1 second ना मैंने एक अच्छा सा पीपीटी बना है so you will understand all these concepts through the ppt और एक दो डेमोस भी देखेंगे don't worry. मेरे इस साइड से ऑडियो प्रॉब्लम है यार I'll start sharing my entire I'm sharing my entire screen because मुझे पीपीटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है so CKD day 2 okay. Yes, so this is day 2 after our amazing Ask Me Anything session. This is the first time we are going to learn about the Docker and Kubernetes. बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे जितना today's session we are going to focus more on the Docker and containerization. Okay, so let's start. Let's begin this. आपको पता है सीकेडी का एग्जाम का फॉर्मेट क्या है सो इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन एग्जाम जहाँ पे देयर विल बी अ प्रॉक्टर सिटिंग व्हाइल यू आर गिविंग द एग्जाम तो आप यू कैन गिव अ एग्जाम रिमोटली फ्रॉम योर होम और यू कैन गो टू द सेंटर कहीं पे भी जाके यू कैन गिव अ एग्जाम ओके so there will be one proctor मतलब एक one man or woman will be there continuously watching you for 2 hours जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता so that person will be there whether you are doing ethically or not whether you are cheating अगर cheating होता है then they will cancel your exam okay and this is an online exam what's the best part of CKD and why did we started this series CKD exam is very इंडस्ट्री में इसको वैल्यू दिया जाता है इट्स अ 2 आवर्स एग्जाम हैंड्स ऑन एग्जाम होता है एंड इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम आपको एमसीक्यू एग्जाम नहीं मिलेगा दिस इज नॉट अ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ओके so you will get some questions related to docker containerization and the kubernetes आपको क्वेश्चन दिया जाएगा you will get a cluster and you will need to solve that question on the cluster so there is no MCQ 1 2 3 इसमें से कोई सिलेक्ट कर दो and you will get a तुक्का लगा तो ठीक है if your answer is correct then you will get a mark otherwise not you will get a 0 mark okay so we have to make sure that we are solving the question correctly throughout this class I'm going to share a lot of tips and tricks so just make sure that you are not missing any of this class एक भी session मत miss करना even if you are not planning for the CKD exam आपको अगर नहीं देना है that is fine but Docker Kubernetes is a thing जो अभी currently market में बहुत ज़्यादा trending है right so this is going to help you to do your projects class your college projects या फिर if you are working in a company then your company projects or if you are giving for a interview if you are going for the interview तो आपको interview clear करने में भी help हो जाएगी again freelancing is another option यहाँ से सीखो freelancing करो बहुत पैसा कमाओ और खुश रहो okay as I said this is the 2 hours exam हमें questions मिलते हैं I think 17 to 15 to 17 questions आते हैं exam में and all those questions are hands on based आपको statement दिया जाएगा और आपको वो question solve करना है performance based if you are not able to solve the question 0 marks directly 0 marks जैसे partially marks वगैरह कोई नहीं रहता और आप तुक्का भी नहीं लगा सकते there is no option right then it is certification is valid for 3 years if and the once you purchase the exam you are eligible to give exam anytime before 12 months आप एक 1 year में कभी भी exam दे सकते हो there is one retake as well if you fail the exam first time that is okay you can give a exam again you get a certification Kubernetes का certification as I said बहुत value है so you will get a certification once you clear the exam right now they are using 1.27 Kubernetes version which is the latest one
and you also get one exam simulator if you purchase the exam coupon. Okay, और कुछ surprises है which I already revealed in our last class. Ask me anything session. I'll share those the surprises with others who are new joiners in our class again at the end of the class. तो अभी हम focus करते हैं हमारे CKD and what we are going to learn. So this is a syllabus. We are going to build Docker images, container images. We are going to build them from a scratch. We are going to modify. We are going to see how to manage the containers. We are going to see how to use the multi-container patterns, different patterns रहते हैं इसमें. So how to use those, when to use those. Then persistent volumes, ephemeral volumes, ये सब कुछ देखने वाले. अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, ये वॉल्यूम वगैरह क्या रहता है. We are going to see everything in detail. स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा रश नहीं करना है, धीरे धीरे सीखेंगे बट अच्छे से सीखेंगे. ओके, एक बार सीखा तो फिर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. Is Recorded. um, sorry. Okay, I'll need to keep watch on this chart as well. अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, ओके. वॉइस क्लियर आ रहा है? ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू. बीच बीच में मुझे पिंग करता रहे ना. इफ I can't speak in English completely, as I said earlier as well. So it is going to be Hindi plus English because बहुत सारे लोग are from India and people who are want to learn in Hindi. So I'm going to keep in Hindi and English, but it's okay. I'm sure you will understand the concept. ज़्यादा difference नहीं रहेगा. Okay. Yeah, thank you guys. So so again, going back to the my PPT. So if you have missed, तो कुछ I was sharing about the CKD exam. इसका pattern क्या रहता है? So we are going to have this proctor based exam where proctor will be seated along with you for 2 hours. 2 घंटे आपके साथ एक online proctor will be there who will continuously monitor how you are doing. तो बीच बीच में आपको पिंग करता रहेगा एंड दे विल आस्क यू टू शो दी अराउंड आपके अराउंड एरिया दिखाने के लिए बोलेगा. ओके, 17 क्वेश्चंस रहेंगे. अब 15 to 17 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे मिलेंगे. यू माइट थिंक कि 17 क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे 2 घंटे में, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू. आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क एनीवन हु हैज क्लियर्ड द सीकेडी एग्जाम. only if you have the गुड प्रैक्टिस. आपको इफ यू कैन राइट अ क्विक कमांड्स वगैरह जो हम सीखने वाले हैं, and if you can solve the questions within every questions within few minutes, then only you can submit all the questions. You can answer all the questions. Otherwise you will feel like not getting enough time for the security exam. Questions easy हो सकते हैं, but if you are not, your speed is not good in solve those questions, then no, we can't do anything. Okay. Yeah, so certificate मिलता है हमें if we clear the certificate this CKD exam, and it is valid for 3 years. बहुत value रहता है. You can see people who have CKD certified और जो हम next certification करने वाले उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है because एग्जाम ही इतना टफ रहता है. प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एग्जाम है. इट्स नॉट अ एमसीक्यू जहाँ पे हम तुक्का लगा सकते हैं. ओके. ओके, नेक्स्ट थिंग हम क्या कवर करने वाले. सो वी आर गोइंग टू कवर डॉकर कंटेनर्स, इमेजेस कंटेनर्स वगैरह क्या होता है, हाउ टू यूज दिस डॉकर क्यूबरनेटिस नॉलेज टू build our application, how to deploy our application, क्या methods हैं. On top of that, along with Docker,
we are going to see Kubernetes as well. Kubernetes so main hai. So three main tools we are going to learn here. KTS. I'm saying Kubernetes at KTS, and we are also going to learn the Helm. This is a new topic they added in 2021. Helm package manager for the Kubernetes. Yeah. So assignment भी होगी. So I'll share my GitHub link वहाँ पे. I'll keep on uploading notes and the assignments. Projects ही बनाएंगे. Projects बनाते बनाते सीखेंगे. Uh, Throughout this class, you are going to get how to tips and tricks to clear the security exam and how to do the job search. Okay. So the first thing first, we are going to start with the first topic, application design and build. And main thing, जो if I don't cover this topic, containers and Docker, तो आपको बाद में सीखने के लिए जो भी नए कंसेप्ट आने वाले वो सीखने के लिए बहुत थोड़ा तकलीफ हो सकता है. And I want to set a base. That's why I sent this meme today morning. Okay, if you are preparing for security exam and if you jump directly to Kubernetes, so थोड़ा setup हो सकता है, and that's why we are maybe from tomorrow we'll start with the Kubernetes concept. This is the base, must base we need to know. Okay, I hope अब आपको ये मीम समझ में आया होगा why this meme. Yeah. So little story, people ask me how was my journey. Yeah, sorry. How was my journey when I joined to join the VMware? So I started my journey after my college with one small company, and there I got chance to work on so many technologies और बहुत कुछ सीखा वहाँ से, and still I keep on learning new things. बहुत कुछ projects बनाते रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, and I also teach others. Okay. So when I joined that company, I got a project to work on Python. Python पे काम करने का एक project मिला मुझे, the first very project. And the situation was, if I don't complete or if I don't set up that environment, I'm a new joinee, just graduated from a college, and I got the chance to work on Python, but I don't know that much Python. उस time ज़्यादा Python पता नहीं था. So I got the task assigned और Python पे काम करना है, so obviously मुझे Python का setup करना पड़ेगा, है ना? So they gave me task. Okay, so ठीक है, you know what you can do. You first task I got is to set up Python environment. Python environment setup करने में मुझे थोड़ा time लगा, but that time I was using some different laptop, मतलब temporary laptop दिया था. They gave me a temporary laptop. I set up the environment, Python वगैरह setup किया, GitHub setup किया. I set up the entire project, and yeah, everything was going good. But after few days, they gave me new polished laptop. बहुत अच्छा सा एक laptop मिला मुझे, and मुझे एक task assign हुआ था on that project only, which was very critical. Okay, they asked me to start my development on the new laptop. Second laptop पे मुझे काम करने के लिए बोल दिया. Now I know how much I struggled to set up that environment. Not only Python, along with the Python, there were so many things required to set up for the project. So they gave me a second laptop, and I started thinking, how am I going to complete this feature without the setup on the new laptop? So the first priority is to set up the environment again from a scratch on the new laptop. That was a bit pain, and I was a bit in tension, because if I don't finish that setup and the feature assigned to me, I would impact हो जाता on my image or performance as well. They would look to me as someone who is not capable of delivering the items for the project. So problem हुआ, but then I realized I did some research, and that time I came to know about the containers. So containers made my life easy. They saved my job, and from that time I have been loved into containers. I'm going to tell you how I did that, but before that,
we want to know what was the life before the containers. um, yeah, session is recording. Okay. My voice is breaking with my session. Okay. So we'll keep this story aside. How I managed to save my first within quick time, with no time. मैंने सेटअप पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया, and that's where the containers and the Docker helped me to save my job. So actually, for students and for the people who are from a non-IT background, to explain you the process in the IT industry. Whenever we got a task, when we get a task, so there are multiple teams. Development team रहता है, and there will be operations team. Okay, so development team will create a project. They will develop a project based on the features. If you know there is an application to develop a LinkedIn like application or WhatsApp like application, that responsibility is of the developers who develop the application. Okay, and the operations team, they will help developers to deploy that application somewhere, in the actual production environment, जहाँ से customers or the people who users can access that application without any error. So these are the two typical different roles in a IT industry. You can say बहुत सारे roles होते हैं, but main categories we are going to focus on these categories: development team and the operations team. Okay, so what happens? Development team will do their work on their computer, their laptop. Okay, once their work is done, they will send their code to the operations team. They will send the documentation to explain the operations team to how to run that application in the production environment. एक डॉक्यूमेंट पूरा लिस्ट वगैरह बना के ऑपरेशंस टीम को दे देंगे. Okay, operations team will deploy that application, but for some reason the application is not able to run in the operations team environment. अलग अलग environment है. Operations team का laptop अलग हो सकता है, computer servers अलग हो सकते हैं, and production environment का तो बहुत बड़ा setup रहता है. So you can expect the different configurations for the development team and for the operations team. Okay, so they will suggest some changes to the development team. फिर से वो changes करेंगे in their application. They will come back, they will send the application again to the operations team, and this keeps on going. This keeps on going. Before the containers, this was the life. कि एक डेवलपर है, वो कुछ एप्लीकेशन बनाएगा, ऑपरेशंस टीम को देगा, ऑपरेशंस टीम कुछ सजेस्ट करेगा, फिर वो डेवलपर कुछ चेंजेस करेगा, and again this is going to be a loop. ठीक है. And why this happens? Developer, as a developer, आपने we are using a laptop computer with a small configurations. हमारे laptop पे कुछ अलग configurations हो सकते हैं. We might be using Windows for our application development, और जो production environment है वहाँ पे कुछ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होगा, या फिर कुछ अलग वर्जन हो सकता है. And that's okay, मतलब हो सकता है, but what's the solution? That was the life before the containers. Okay, and then containers came into the picture. Containers came to the rescue, and came to rescue to save our jobs, operations teams and the DevOps job. तो उसके बाद हुआ क्या? When how these containers helps. तो container क्या होता है, Docker image क्या होता है, that we are going to see next. But now uh, when containers came into picture, developer, instead of sharing their binaries and then documentation to set up the environment in the production environment, okay, documentations, dependencies वगैरह ये सब कुछ share करने से, they started sharing the Docker image. Okay, they build an image for their application,
and they started sharing that image to the operations team. Okay. Uh, then they will ship that Docker image to some Docker registry, and operations team will set up the environment. So now the problem of the dependencies, binaries, operating system mismatching वो सब कुछ solve हो गया, because now no one can say that the the application was working in my environment, and now it's your responsibility to make sure that how it is going to run in the production environment. Now, because we are not saying sharing these dependencies, binaries, documentation separately. जो भी लगता है to run our application, everything combined we are going to share in the form of Docker image. यहाँ पे अगर Docker image चल रहा है, then make Docker and the image will make sure that it is same running on the any environment, not only production environment. सब environment में smoothly run होगा. Okay. So that's how the containers help us to solve this dependencies issue. Okay. Now coming back to my story, मैंने बोला that first laptop में I did some setup, Python, Git, GitHub, Node.js and some Docker, Kubernetes, बहुत not Docker Kubernetes, बहुत कुछ install setup करके रखा था मैंने. और कुछ वीक के बाद I got a new laptop and they asked me to set up the same environment again on my new laptop. So it was going to be time consuming process. What I did, if my application needs a Python, so I started using a small Docker image of the Python. Okay. I built the Docker image for my application, use the Python. ये कैसे use करते हैं सब कुछ बताऊंगा बाद में. But this was quick process to set up Python Docker container or the Docker image for my application. It took me within seconds I was able to set up the same environment which I needed for which was there in my first environment. It was very quick, and that helped me to save my job. My first job was very first job. Okay, and yeah, we are going to see how to set up that. Okay. Now with the containers and the Docker image, there is no need to one second. Yeah. Now with the of Docker containers, now there is no need to hand over the text document for environment setup to the operations team. Because if we send the textual document to set up the environment, okay, na, we said, okay, as I'm a developer, I did this setup. मेरे environment में this is the configuration. Operating system Linux है, Python का ये version है, okay, ये सब कुछ लिख के we send that notification, this documentation to the operations team. ये पहले होता था operations team को भेज दिया, and हमने उनको बोला okay, now you can set up the same environment और आपके environment में सब कुछ चल जाएगा as it is because it's working on my machine. But आपको reality पता है वैसे होता नहीं है. If some because this is a complete different machine. ऑपरेशंस टीम एंड द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है एंड होता भी है, right? So there is a high chance that with even following this textual document to set up the environment, they can misunderstand the instructions और कुछ अलग सेट करते बैठेंगे, okay, and it happens. So so that problem we are going to solve with the Docker container images. जो भी लगता है, now I don't want the textual document. Developer can send their documentation, application, binaries, whatever is required to run that application directly in the form of Docker image to operations team, okay, to deploy the application. Okay. One another benefit is to you can run your container within a single command anywhere, anytime, in any environment. Okay, as I said, हमारे
प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे एनवायरनमेंट रहते हैं. इवन यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माय एग्जांपल एज वेल. आई हैड अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. मेरा पहला लैपटॉप अलग एनवायरनमेंट कंसिडर करो एंड द सेकंड एनवायरनमेंट इज माय सेकंड लैपटॉप. पहले क्या क्या चांसेस है दैट द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है ऑन द फर्स्ट लैपटॉप द सेम कॉन्फ़िगरेशंस आई हैव ऑन द सेकंड लैपटॉप एज वेल. वेरी लेस चांसेस. मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता. दैट्स अ रिस्की. And if I misunderstand anything to set up during the setup environment, so it will take a lot of time. So with the help of Docker container, we use a single command. We can run a Docker container anywhere on any machine. You can run in a cloud. You can run those containers on laptop, MacBook, Windows, Linux वगैरह कहीं पे भी रन करो. रात को 2 बजे रन करो, सुबह 9 बजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. As it is वो सेम एप्लीकेशन रन होने वाला है आपका. Okay. Another benefit is containers run in a separate isolated environment, consist of all its required configuration. So now instead of setting sharing all these instructions one by one कि ये install करो वो install करो, हमें ये झंझट में पड़ना ही नहीं है. As a developer, we are going to get share a Docker image जिसमें सारा configuration रहेगा with its compatibility, जो भी required dependency है, packages है, उसका application code है, binaries है, operating system है, सब कुछ Docker image में बना के दे दो ऑपरेशन टीम को डिप्लॉय करने के लिए. एंड इट्स वेरी फास्ट एंड कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशन. बहुत फास्ट प्रोसेस होता है. We saw one example. I shared my one story, right? तो पहले मुझे सेटअप पहले लैपटॉप पे सेटअप करने के लिए it took me maybe around few weeks, but when I introduced to the Docker containers, it took me seconds to set up my environment. बहुत easy हो गया था मेरे लिए. Once I understood the Docker and container. ऑडियो का कुछ इश्यू है. My bad, यार. Is it my network? Just give me 1 minute. I'll switch my network. Yeah, give me a few minutes. Huh? Sorry, I said my password. Let me know if my voice is clear now. Clear? थोड़ा मुझे बीच बीच में पॉज लेना चाहिए तो फिर क्लियर आएगी. वीडियो लैग हो रही है. Not now. Okay. थोड़ा धीरे चलते हैं फिर. और
I'll stop my video. ठीक है, फिर ऑडियो के लिए थोड़ा अच्छा हो. Yeah. Okay guys. ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया. Why we need a Docker, why we need a container. Is it clear? Yes. Okay, great. Especially to the students and someone who is new to the class. Docker container वगैरह आपको अगर पता नहीं है. Okay, great. Yeah, I have stopped my video. Okay, so you will not see my face now. You please, आपको सिर्फ वॉइस आएगी अभी. And now I'll share my screen. हाँ, स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको. Okay, ठीक है, फिर we'll go back to our class. CKD day 2. जब तक you are here, we can continue. This is going to be 2 hour session. This is just started. We are learning a Docker and containers. Okay. Now, instead of shipping, instead of sending our documentation in Word format, we are going to share a Docker image, textual document, textual guide. We are not going to share with the operations team to set up an environment, saying that I am using a Linux of this version, Python ये use कर रहा हूँ, इसका ये version use कर रहा हूँ. Now you can set up your environment in operations development or the production environment. We are not going to say that. What we are going to do, instead of using sending this documentation, we are going to share the Docker image or the container image. Okay, image भेजेंगे, and that image should work in any environment. Okay, this image will work on any environment anytime, and it's very small process. Yeah. So the process has become very faster now. Consistent delivery of our application. If it is working on our machine, it is going to definitely now work on the other machines as well. Okay. Yeah. So you might think the people who have worked on the virtual machine, virtual box, but if you have used it, so you might have noticed how these containers are different from my virtual machine. So if that is your question, then this slide will answer your question. Okay. Not technically, we are not going to see it. We are going to keep it the. We are going to see the main points, how the containers and the virtual machines are different. Okay. The size of the containers is very small. The small image size and the container size is very small. Why? Because as we discussed, whatever is required to run our application inside the container, that application will be there. Okay. हम क्या क्या ऐड करने वाले हमारे डॉकर इमेज में एंड डॉकर कंटेनर में. एप्लीकेशन, द डिपेंडेंसीज, जो डिपेंडेंसीज लगने वाली है, उसके साथ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अगर कुछ लगता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू शेयर इन दैट डॉकर इमेज एंड द कंटेनर. नथिंग एल्स. आपके वर्चुअल मशीन में क्या होता है? वर्चुअल मशीन साइज इज इन जीबी और डॉकर का इमेज साइज जो रहता है, द स्मॉलेस्ट इमेज साइज, इट कैन बी इन केबीज. ओके, केबीज और बाइट्स में होता है. So you can imagine to run these Docker containers, we can run thousands of Docker containers on a single machine. But can you run the 1,000 virtual machines on your laptop? Not possible, because the size of the virtual machine is huge. It's in GBs. It's not in KBs or bytes. That's why it's why it is that? Why the size of the virtual machine is in GB? Because even if you don't require some of the application, those application will come by default in your virtual machine. Like
आपके यहाँ पे मल्टीपल ब्राउजर्स रहेंगे. You will see the multiple browsers in your virtual machine. Firefox होगा, Chrome होगा, then you will see some क्या बोलते हैं उसको, ओपेरा मिनी वगैरह, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो whichever we are not going to use, those softwares also are going to be there, which makes it which makes the size of the virtual machine huge. Okay, not only this browser example, आप कोई भी example ले लो, you start a virtual machine and you will see the default softwares which you might not use to run the current software application. But that is not the case in Kubernetes, sorry, in containers. What we said, for our application, तो हम application डालेंगे in Docker container. The dependencies, जो dependencies लगती है to run our application, environment variable, operating system, micro मतलब छोटा सा operating system environment जो लगने वाला है, and the configuration उतना ही रखने वाले. If my another application require different setup, then I'll create a separate Docker container. I'll not use the separate container, same container. Okay, that makes the size of the Docker containers very small. अगर size small है, then the boot up time is also faster. If अपने अगर virtual box पे virtual machine अगर setup किया होगा, so it takes around time in a minutes, at least 10 to 15 minutes लगेंगे. If you stop the your virtual machine और फिर से अगर आप start करते हो, again it will take 10-15 minutes. But because of these small sizes of the Docker image and containers, you can stop Docker containers anytime, and it will take seconds, or it will get start in milliseconds as well, if you keep the Docker image size smaller. Okay, faster deployment and setup time. Okay, as we discussed, matlab, if I am a developer and I am working in a team, ऐसे होता है, right? In your college project also, you will be working on with your team members. बहुत सारे team members होंगे आपके project में, and even in a organization as well. We work in a team. बहुत सारे लोग होते हैं एक project पे काम करने के लिए. So what if you want to share the application code and it should work similarly in a different environment? Okay, so with the Docker container it becomes very easy, because as we discussed, Docker image share करना है. We are not we don't need to share our entire operating system image or virtual machine image. Setting up the virtual image again in a different environment will take some minutes, but we are going to reduce that time again into the seconds or the milliseconds with the help of Docker containers and image. Better utilization of the available resources. Okay, why better utilization with the containers? Because हम application जो लग रहे हैं, that only we are running in the form of containers. We are not running anything which is not required, है ना? So for example, in our laptop, I am currently now using PowerPoint, Chrome browser use कर रहा हूँ, but there are some background processes which may not be required for my current purpose to run my this session are also running, and it is consuming some memory, CPU वगैरह ले रहे हो unnecessarily, right? So but in case of Docker containers, you can set up CPU memory limits वगैरह set कर सकते हो, and again because of the size of the application is very small in the container, it is going to take a very small CPU and the memory of your operating system or of your server. That's why these points makes Docker and the containers the favorite development platform for containers. Okay, is it clear? कितने मैसेज आए यार? Okay, clear. Okay, good. हाँ. Yes, one more example I would like to share. मतलब एक quick example. Okay. अगर आपको application के for your application, you might have seen WhatsApp पे हमें versions मिलते हैं, WhatsApp के versions आते हैं, और we keep on upgrading those versions, V1, W1,
व्हाट्सएप वर्जन 1 2 3 ऐसे कुछ वर्जन हो सकते हैं। सिमिलर लाइक जो हमारे प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन हो गए, प्रोजेक्ट रहेगा उसके भी वर्जन हो सकते हैं। एंड फॉर सम रीजन वी माइट नीड टू स्विच बिटवीन दोज वर्जन का जो भी डिपेंडेंसीज है, whatever the dependencies we require to run the application. Let's say we are using a Python to run our application. Python 2 use कर रहे हैं, ठीक है? Python 2 use कर रहे हैं. We are in a last semester, last day है. We are running our application. बहुत अच्छे से project चल रहा है. And because of some reason, not some reason or something, you Python 3 is also released during the same time. Python 3 release हो गया. And you're waiting for that feature which is there in a Python 3. आप क्या करोगे? Now you are in your you are doing your final year project, and there are no many days left to submit the project. You want to try it again. आपको Python 3 अगर सेटअप करना पड़ेगा तो फिर टाइम लग सकता है, because it's a new environment, right? New package, new program is there, Python 3. So what's the solution? If you are using a Docker Kubernetes Docker containers, you can simply mention that I need a Python 3 environment. आप image में specify कर सकते हो. एक ही line लिखना है आपको, कुछ भी नहीं करना है. एक ही line लिख दो and it will give you Python 3 environment. Okay, so it becomes very easy with the Docker containers. Yeah. Now Docker बहुत बोल लिया मैंने. Containers and image. Now it's a time to understand what is this Docker. क्या चीज क्या है Docker? इतना बवाल क्यों मचा रखा है, right? Thank you. Video stop कर दिया तो now you are hearing the voice. सब सीखने वाले. How to create a image container कैसे बनाएंगे, सब कुछ सीखने वाले. Yeah. अरे लैब डायरेक्टली नहीं जंप करने वाला है. सो यू आर इन माय क्लास. थोड़ा थ्योरी प्लस थोड़ा प्रैक्टिकल दोनों होने वाला है. डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू जंप इन द प्रैक्टिकल. So what is Docker? So Docker is a favorite platform अभी जो ट्रेंडिंग पे है for developing, shipping and running your application. Why we are saying these 3 words? आपको अगर पूछा गया in interview what is a Docker, 3 words बोल दो, and with these 3 words you can explain entire Docker. क्या होता है Docker? You can use the Docker for development. ये हमने एग्जांपल देखा. If we need a environment to build our application, to develop our application, we can use a Docker. एक लाइन में लिख दो that I need a Python environment, Python 3 दे देगा. एक लाइन में लिख दो that I need a Ubuntu environment, Ubuntu दे देगा. So likewise you can use this Docker platform to develop application. Is it clear? The second point, how we are going to ship the application using the Docker. So you are going to ship the application with your team members or into production environment or with operation teams, or if you are student with your team members, with project members. Okay, so you are not going to share the source code. आप GitHub का link वगैरह देते नहीं बैठोगे. You will share the actual Docker image of your application, and that Docker image will run definitely on the any platform. आपके दोस्त के मशीन पे भी चलेगा, आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स के मशीन पे भी चलेगा, सब पे चलना चाहिए. ओके, एंड टू रन अ एप्लीकेशन, यस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू रन एप्लीकेशन इन अ डॉकर. तो हम क्या करते हैं, हम डॉकर को बोलते हैं भाई मुझे पहले एक एनवायरनमेंट दे दो, मुझे एक पाइथन का एप्लीकेशन रन करना है, तो मुझे एक एनवायरनमेंट दे दो कॉल्ड पाइथन. तो हम स्पेसिफाई करेंगे डॉकर इमेज में दैट आई नीड अ पाइथन एनवायरनमेंट. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल run our application. हमें एक बार environment मिल गया, then we can copy our application binaries, dependencies, ये सब कुछ Docker image में add कर देंगे, application dependencies. Okay, sorry for my bad handwriting. I'm not using iPad वगैरह use नहीं कर रहा मैं. Okay, so application dependencies add कर दे. Now you can share this Dockerfile or the Docker image with your friends, and they can run Docker Docker container from that image. So Docker container में your application will be running. Okay, so we are going to see that in more detail. But the thing is, you can develop any application
you can ship your application, you can run the application in the Docker container. It is the technology which helps us to do that. Okay, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. Are you guys able to understand this name? Now on, we are using now onwards we are going to use the Docker. So no more saying that it's not working on my machine. Now it's your problem. No more saying of that. Okay. No more compatibility issues. No more operating system issues, or no more dependencies issue. Okay. Yeah. So we have covered all of these points. It helps us to reduce the delays between writing our code and running it in production. आप code लिख दो, आप Docker image बना दो, and that Docker image will get deployed in within a seconds in a production environment. That is how it is faster, because the size and the speed and the building of Docker image, environment setup, सब कुछ सारे problems Docker ने solve कर दिया हमारे. Okay. Yeah, and then we already saw the containers are lightweight, contain everything needed to run an application. थोड़ा repeat हो रहा है, but it is very important us to understand what is Docker and the containers. Lightweight, it is going to work on seamlessly on all kind of environments in the same way. Okay. And what is Docker? So, जो container technology which we are discussing right now, containers, Docker is to manage the life cycle of that Docker containers. The containers, there is a tool called Docker which helps us to do that. Okay. Now, few things, ये questions पूछते हैं. I also got this question in one of my interview. Explain the Docker architecture. So very simple architecture है. As a Docker user, we are going to run some commands. Okay. So Docker follows the client server architecture. There will be one Docker client and there is one Docker host. And जैसे GitHub होता है to store अपना कोड स्टोर करने के लिए रहता है. तो सेम लाइक टू स्टोर द डॉकर इमेजेस वी हैव द डॉकर रजिस्ट्री. Okay, we call it as a Docker hub, which is a public registry. You can set up your own registry as well. Okay. Yeah. So the you as a client or the Docker user, you install the Docker CLI. हम देखेंगे how to install the Docker CLI, and from that CLI you can run the Docker commands, Docker run, build, pull वगैरह. Okay. When you type those commands from your terminal, all those commands goes to the Docker daemon or the Docker server. Okay. Docker server uh, Docker server पे एक component रहता है Docker daemon, which listens for the API request and which also helps us to manage the Docker containers and the image. So this is a main component. Okay. Docker daemon is a main component which manages the Docker images and the containers. And one more thing, this will be little advanced for the newcomers, but whenever you write a command from your terminal, that command goes converted into Docker API. Okay. So Docker run का एक API होगा, that command will get converted into Docker API and it will send to the Docker daemon. It will check what's the command it received and it will perform the action. अगर आपने बोला है using Docker CLI, okay, भाई मुझे एक Docker container बना है, उसका command run करो, and if that command you will fire from your CLI, that command will go to the server and it will create a Docker image or the container. Okay. As we discussed, Docker registry stores the Docker images. Docker hub is a public registry जहाँ पे you can see a lot of images already available. Okay, search for this Docker hub. अगर आप Docker hub search करोगे तो आपको पूरा ये मिल जाएगा, बहुत सारे images मिल जाएंगे. एक्सप्लोर करते हैं अभी के लिए. ठीक है. So let's say हमने Python बोला था ना, तो Python का हमें setup नहीं चेक करना है. Now onwards, if we need a Python environment, we are going to use a Python image. So this image has everything you need for the Python. Okay.
आपने बोला आई नीड अ उबंटू इमेज, उबंटू का इमेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा likewise. So this is something, it's a public registry, public Docker image registry where all the images are kept. um, ये वाले कंपोनेंट्स क्लियर है, डॉकर डेमन क्लाइंट एंड रजिस्ट्री. नेक्स्ट मेन डॉकर इमेज और कंटेनर समझ लो, बाकी कुछ समझ में आया नहीं आया दैट इज फाइन. ये थ्योरी था डॉकर रजिस्ट्री इमेज एंड कंटेनर्स, इतना समझ लो. डॉकर इमेज क्या होता है? डॉकर इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट विद इंस्ट्रक्शंस फॉर क्रिएटिंग अ डॉकर कंटेनर. तो डॉकर इमेज से बनता है डॉकर कंटेनर. ओके, दिस अ डॉकर इमेज एंड इससे बनेगा हमारा डॉकर कंटेनर. इट्स अ रीड ओन टेम्पलेट. यहाँ पे सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे. हमने डिस्कस किया ना प्रीवियसली क्या होता था, दे यूज्ड टू सेंड द डॉक्यूमेंट, अलग से एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज वो सब कुछ शेयर कर देते. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेट अप all those instructions, we will set all those instructions in the form of template, और उस template को बोलेंगे docker image. this is a template. okay, ये जो टेम्पलेट आप जब रन करते हो, इस डॉकर इमेज को जब रन करते हो, उससे बनेगा हमारा डॉकर कंटेनर. डॉकर इमेज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, इट कैन बी बेस्ड ऑन द अनदर इमेज एंड उस इमेज को हम पैरेंट इमेज बोलते हैं. तो हम डॉकर फाइल लिखने वाले, सो वी विल सी हाउ दैट वर्क्स. टू बिल्ड योर डॉकर इमेज यू नीड अ डॉकर फाइल. ओके, हमें एक फाइल लिखना पड़ता है जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे. उस फाइल से वी क्रिएट अ डॉकर इमेज. डॉकर इमेज रन करने के लिए हमें लगता है डॉकर फाइल. क्लियर है? हम लिखेंगे डॉकर फाइल, उसको बिल्ड करेंगे. डॉकर फाइल बिल्ड करने के बाद वी विल गेट अ डॉकर इमेज. ओके, बिल्ड करने के बाद हमें मिलेगा डॉकर इमेज एंड डॉकर इमेज को रन करने के बाद हमें मिलेगा एक कंटेनर. ओके, सो we are going to see that in detail. डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं, डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं, डिटेल में देखेंगे. नाउ व्हाट इज कंटेनर? ये रहा डॉकर इमेज. डॉकर इमेज भी हमने डिस्कस किया कि डॉकर फाइल को बिल्ड करने के बाद हमें डॉकर इमेज मिलता है एंड व्हेन वी रन अ डॉकर इमेज उससे बनेगा कंटेनर. तो फिर डॉकर कंटेनर क्या? डॉकर कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ इमेज. जब आपको आपका एप्लीकेशन रन करना है तब आप डॉकर कंटेनर यूज करोगे. ओके, आप पहले आपका एप्लीकेशन के लिए एक डॉकर फाइल लिखोगे. फ्रॉम दैट डॉकर इमेज डॉकर फाइल यू विल बिल्ड अ डॉकर इमेज जहाँ पे आपका नॉन रनिंग एप्लीकेशन रहेगा एंड you will run the Docker image to start your application as a Docker container. Okay, so Docker container is a runnable instance of an image or of your application. You can create, start, stop, move or delete containers using Docker API or CLI. हमने देखा है कि वर्चुअल मशीन को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट यू विल सी डॉकर कंटेनर में इतना टाइम नहीं लगता. विद इन सेकंड्स इट विल स्टॉप योर कंटेनर्स और स्टार्ट योर कंटेनर. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Container is defined by its image as well as any configurations options and all those things. Okay. Whenever container is started, it starts an actual application and remove any changes to its state that are not stored in its persistent storage. बस ये वाला इमेज याद रखो, ये वाला डायग्राम याद रखो. हमें डॉकर फाइल लिखना है हमारे एप्लीकेशन के लिए. उसमें डॉकर फाइल में हम दे देंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन हमें बिल्ड करना है, एप्लीकेशन कौन से कमांड से रन होगा, एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंसीज कौन से हैं, वो सब आ जाएगा हमारे डॉकर फाइल में. डॉकर फाइल बिल्ड करने के बाद बनेगा डॉकर इमेज. इट्स अ नॉन रनिंग एप्लीकेशन. ओके, जब हम उस इमेज को रन करेंगे, व्हेन वी रन दैट इमेज, उससे बनेगा हमारा डॉकर कंटेनर और डॉकर कंटेनर में होगा हमारा रनिंग एप्लीकेशन. ओके, सो फॉर दिस डेमो कितना टाइम है?
Okay. For this demo, either you can use the play with Docker or you can set up Docker locally on your machine. Docker ने उनका जो था सॉफ्टवेयर वो लाइसेंस कर दिया, so people now you may not able to install the Docker software. मतलब वो officially you can't use it without the licenses for company projects and all. If you have the license, then only you can use. For practice, there is a play with Docker that you can use. ठीक है, आपको कोई भी कुछ tool वगैरह install नहीं करना है. Just you will need to create a one account on play with Docker और उससे आपका काम हो जाएगा. Yeah. So play with Docker ये वाला आप चेक कर सकते हो this link. Okay, I'm sharing the link for the Docker Labs play with Docker. Hey, I have already connected charger. Thank you. So you can create an account on this. I already have account, so I'll quickly start. आपको अगर कुछ भी प्रैक्टिस करना है फॉर डॉकर या फिर लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग का वगैरह प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन यूज दिस as this session. I'll close. You can go to this labs playwithdocker.com, create a new instance. Okay, and here you will find a Docker install already. काफी Docker already installed है. And if you want to install Docker on your machine, so Docker installation, install Docker, get Docker. Okay, ये वाले लिंक पे जाओ आप. इफ यू आर यूजिंग मैकबुक तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डॉकर डीएमजी फाइल डाउनलोड करनी है, उस पर क्लिक कर दो. डॉकर ऐप ओपन होगा, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, एक्सेप्ट कर देना जो भी रिक्वायर्ड है, एंड यू विल गेट अ डॉकर इंस्टॉल ऑन योर मशीन. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं. If you want to install Docker on Windows, then there are two options. Either you should have the WSL to backend installed. ये सपोर्ट होना चाहिए सिस्टम रिक्वायरमेंट WSL2 और Hyper-V backend Windows containers. Okay, and for that was for Windows containers. Again, for Windows you can install the .exe file from Docker desktop पे जाने के बाद you will get a Docker.exe file. Okay, I'll share this link as well. You can set up the Docker on Windows using this. Windows के लिए ये लिंक फॉलो करो. मेरे पास Windows है नहीं अभी. I'll not be able to show you. For MacBook you can follow this link. कुछ भी नहीं, एक फाइल डाउनलोड करना है बस और you can install it. Okay, Linux, if you want to set up on different Linux environments, so you can follow these instructions. Install on Ubuntu, Dev वगैरह सब कुछ है यहाँ पे. Just follow this. If you face any problems, let me know in our WhatsApp group. I'll help you. Linux के लिए you can follow this. Yeah. Yes. बट अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट. यू कैन डू डॉकर प्रैक्टिकल्स फ्रॉम द ब्राउजर एज वेल. एटलीस्ट मोबाइल होगा, then you can
create account on labs play with Docker, you can register for this. You will get a free instances here. So यहाँ पे Docker freely install है. Okay, we don't need to do anything. Okay, so next thing installation तो हो गया. That's why I was saying कि come to the class और बाकी का setup वगैरह हम यहाँ से कर लेंगे. Otherwise I'll at least suggest the alternative. ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट? अगर आप खुद से करोगे, इफ यू आर न्यू और आपको डॉकर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर यू विल फेल डिमोटिवेटेड. आप फिर डॉकर और क्यूबरनेटिस सीखना ही कैंसिल कर दोगे. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कम टू द क्लास, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ स्क्रैच. Now if you have the if you have created account on play with Docker, you'll go for the next thing. Okay. Yeah, so कुछ commands है that we are going to see more in detail. So Docker image हमें पता है how to create a Docker image, what is the usage of Docker image and what is the usage of the Docker containers. But in Docker image को बनाते कैसे हैं या फिर Docker containers को बनाते कैसे हैं, that's the main point, right? We saw कि एक Docker फाइल लिखना पड़ेगा हमें. यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक डॉकर फाइल लिख दो हमारे एप्लीकेशन के लिए, उसे बिल्ड कर दो, उससे डॉकर इमेज बनेगा एंड उसे रन कर दो, फिर कंटेनर बनेगा. दीज आर द कीवर्ड्स, ये याद रखो. बिल्ड बिल्ड करोगे आप डॉकर फाइल को तब डॉकर इमेज बनेगा. आप रन करोगे डॉकर इमेज को तब कंटेनर बनेगा. So now some of the these commands we are going to see for Docker images वगैरह, and हम पहले डेमो देखेंगे, उसके बाद ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, just a second. या डॉकर लैब्स पे ही हम पूरा ये सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं. Docker container में on Windows and then play movies in isolated environment. I mean, do we get a GUI functionality too? I have not tried it, but आप try करो फिर मुझे बताना, because in Docker it mostly gives you your CLI, आपको टर्मिनल मिलेगा. If you are able to set up जो भी डेस्कटॉप के लिए लगता है, if you are able to set up that, then you can. No, his question is different. It's not about the Docker desktop. Okay. Then okay, we are going to continue with our this demo. Demo बनाया है मैंने. So there are two applications actually. जैसे हमारा रिचुअल होता है, we are going to start with a hello world application. बहुत सिंपल एप्लीकेशन है. We are going to use the Python. मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS है, so I'll use a Mac. You can use the Ubuntu. So first we are going to see how to run a hello world application without using a Docker, and then we are going to convert that into a Dockerized application. ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. एक कोड छोटा सा प्रोग्राम लिखा है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, इफ यू आर ट्राइंग तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन लिखना है ना, और हमें इसको ब्राउजर में एक्सेस करना है, नॉट ऑन द टर्मिनल. तो वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड पॉइंट्स टू एक्सेस दिस हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, हेलो डॉकर एप्लीकेशन. ओके, so you will need to create one file called app.py. app.py में one second, I'll just zoom it, आपको दिखेगा अच्छे से. 25 साइज कर देता हूँ.
साइज बढ़ा के नहीं यार इसका 25 30 या app.py इसमें हम क्या करेंगे आर एप्लीकेशन इज रिटन इन पाइथन तो हमारे फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .py आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो सो टू वॉक यू थ्रू हम क्या करेंगे और एक एप्लीकेशन सेम एप्लीकेशन लिखते हैं हेलो वर्ल्ड डेमो ओके एक फोल्डर बनाओ हेलो वर्ल्ड डेमो उसके अंदर एक पहले फाइल बनाएंगे app.py ठीक है वी आर as we discussed हमें ये एप्लीकेशन ऐसे कुछ URL टाइप करने के बाद हमें हेलो डॉकर दिखना चाहिए राइट तो हम ऐसे पॉइंट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ये वाला अगर URL टाइप करते हैं तो फिर हमें हेलो डॉकर या फिर हेलो वर्ल्ड ऐसे मैसेज दिखना चाहिए इन अ ब्राउजर so we are going to use a flask is a you know library uh, which is provided by the which is supported for the Python application, which can help you to create a web-based application. So we are going to use that library, Flask, to create this kind of input. So I'm going to start with the Flask library. I'm importing the Flask. Then I'm creating one endpoint. It's an endpoint slash, right? That for that I'm writing this function. Not in detail आपको ये डिटेल में समझने की जरूरत नहीं just think like we are creating something which can be accessible from our browser एक Python में simple application लिख रहे हैं hello world okay so ये Flask का कुछ वर्जन रह सकता है so we are going to put that in a requirements.txt file एक और एक फाइल बनाएंगे requirements.txt file और इसमें we are going to put the Flask डिपेंडेंसी हम क्या बोल रहे हैं इन requirements.txt फाइल में जो भी डिपेंडेंसीज लगने वाली है फॉर दिस एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू कीप देम इन another file called requirements.txt okay now what is the instructions what are the instructions to run your Python application this is without docker ये कंसीडर कर लो okay तो हमने क्या किया पहले तो एक फोल्डर बनाया हेलो वर्ल्ड डेमो I'll copy this again instructions.md okay पहले हमने एक फोल्डर बनाया हेलो वर्ल्ड डेमो उसके बाद we switch to that folder directory using a cd command and then we created few files एक पहले हमने फाइल बनाया app.py उसमें एक लॉजिक लिखा है to create a endpoint slash endpoint अगर वो ब्राउजर में हिट कर दे endpoint then we should get a hello docker message okay तो हमने दो फाइल्स बनाई तीन फाइल्स बनाई है app.py requirements.txt and the instructions.md now the next thing is to run this application python application हमें एक कमांड रन करना है ये दो तीन कमांड्स रन करने तो फर्स्ट कमांड इज टू अपग्रेड द पाइप जिससे सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होते हैं तो हम ये कमांड करके पाइप इंस्टॉलर रहता है डिपेंडेंसीज इंस्टॉलर सो वी आर गोइंग टू अपडेट दैट अपग्रेड करें this not required mandatory step nahi hai you can skip this as well no worries these are the two main steps agar aapko without docker python run karna hai then we can run the this command to download the flask dependency flask को download कर रहे हैं पहले and then we are running the application python 3 hyphen name flask run you can see the message here हमारा सर्वर चल रहा है flask and if we access this endpoint हमें एक मैसेज दिखना चाहिए hello docker
ओके, दिख रहा है मैसेज? पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हो। Python 3. Okay. This thing we can run from here as well. तो हम क्या करेंगे? same assignment we will follow from our Docker lab. एक directory बनाते हैं, hello world demo. कुछ डायरेक्टरी में स्विच होता है पहले यूजिंग अ cd कमांड। तो लिनक्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर नहीं है तो जस्ट क्विक ओवरव्यू। mkdir से हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, जैसे हमारे विंडोज में जैसे फोल्डर रहता है, तो वी कॉल देम एज अ डायरेक्टरी इन अ लिनक्स। तो mkdir कमांड विल क्रिएट अ वन डायरेक्टरी या फिर फोल्डर, और फोल्डर के अंदर वी कैन स्टोर मल्टीपल फाइल्स। एक बार फोल्डर बन गया using a mkdir command, we are switching to that directory. हम change directory कर रहे हैं using a cd command. तो cd switch to the new directory जो हमने बनाया है, hello world demo. Okay, we are already in that directory, hello world demo. तो उसके बाद instructions क्या बोलते हैं? Once you create a directory, you need to create 3 different files here. Okay, यहाँ पे हम फाइल्स बनाएंगे यूजिंग अ टच कमांड। तो एक 3 फाइल्स बना देगा, app.py, instructions.md and requirement.txt. So we are going to edit the app.py. यहाँ पे हम कोड लिखेंगे to create a endpoint. Okay, ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमें requirements.txt फाइल में बताना है कि कौन सा डिपेंडेंसी लगने वाला है। क्लास लगने वाला है। Now we are going to install that dependency. Dependencies इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है? Python 3-a pip install flask, और we can give a file name as well. Okay, तो dependencies इंस्टॉल कर लेते हैं। या क्लास ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया। Okay, now we are good to run our Python application. Python application run करने के लिए run this command, second command, Python 3-m flask and run. You can see हमारा इस पर Docker labs में भी ये चल रहा है। और Python का एप्लीकेशन जो Hello Docker का एप्लीकेशन हो रहा है run, that we are able to run in Docker labs as well. तो हम क्या करेंगे, इस वाले से डॉकर लैब के इस पे से एक्सेस करेंगे उसको। ओपन पोर्ट 5000 और हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है 5000 पोर्ट पे, तो उसको एक्सेस कर दे। आ रहा है क्या? इस सारा थी। We will run this in background. Okay. और यहाँ से ट्राई करते कि कुछ दिखता है क्या। Try to run the HTTP endpoint :5000 और 5000 पे हमें हमारा एप्लीकेशन दिखना चाहिए। कल -i and this is our endpoint. Ideally we should get the
hello docker print हो रहा है. So this we are able to access this application using a command line. Somehow this is you know, हमारे लैपटॉप के ब्राउजर से it is not able to access it in our laptop browser. But same thing if we try from here using a curl command, it is showing hello docker output. Okay, which means our application is running fine without docker. तो हम इसको docker में कैसे convert करेंगे? Okay, हमने बोला if we want the docker का image, so we need a docker file, right? हमें docker file लगता है. डॉकर फाइल उससे बनेगा डॉकर इमेज एंड डॉकर इमेज से बनेगा डॉकर कंटेंट. डॉकर फाइल की कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका फॉर्मेट देखते हैं. ये इंस्ट्रक्शंस हम वन बाय वन देखेंगे इन लाइव एग्जांपल. तो फर्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन एंड उसके आर्गुमेंट्स रहते हैं, तो उतना ही याद रखो. और एक डॉकर फाइल से हम डॉकर इमेज बना सकते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द डॉकर file for our application. पहले you can create one file here called Dockerfile, and it's the Dockerfile instruction. Okay, Dockerfile करके एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे. फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, हमें पाइथन का एनवायरनमेंट चाहिए. So we are going to use a instruction called from. From instruction क्या बोलता है? From instructions आपको एक environment देगा. If you need a Ubuntu environment, मैंने बीच में बोला था स्टार्टिंग में, if you need a environment, तो आपको सिर्फ वन लाइनर लिखना है that I need a Python environment, I need a Ubuntu environment, और आपको Docker image, Docker container fully environment available करके देगा. So for this our application we need a Python environment. तो इसके डिफरेंट वर्जन्स भी रहते हैं, डॉकर इमेजेस के डिफरेंट वर्जन्स रहते हैं. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्जन पाइथन 3.8. दिस इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ द पाइथन 3.8. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. उसके बाद what we need a requirements.txt file in a docker image. We need a and then we need to जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया, राइट. If you look at the instructions.md, पहले हमने ये सारे फाइल्स बना लिए. Then we install the dependencies pip3 install.flask. Then we ran this file, this command flask run. So same if you compare with the docker file, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, it's the same thing. हमें एक पाइथन का एनवायरनमेंट चाहिए था, हमने पाइथन इंस्टॉल किया पहले. उसके बाद हमें एक requirements.txt फाइल चाहिए थी, so हमने रिक्वायरमेंट फाइल लिख दी. आफ्टर दैट वी install the dependencies, flask वगैरह इंस्टॉल कर लिया, which was there in a requirements.txt. Sorry, yeah. So instead of using this command, so it's the same thing. हमने एक command run किया था to install the flask dependency, python 3-m pip install flask. So if we run this, it's the same thing because हमने requirements.txt फाइल में क्या लिखा है, हमने बोला है कि we need to install the flask. सेम चीज होगी. तो या वी आर गोइंग टू देन वी इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज. उसके बाद हमने हमारा एप्लीकेशन रन किया. एप्लीकेशन कैसे रन किया, यूजिंग द python 3-m flask run command. सेम चीज है. तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस फाइल और एक डॉकर फाइल नाम से एक फाइल बनाते हैं टू क्रिएट अ डॉकर इमेज. ओके, वन बाय वन आई ट्राई टू एक्सप्लेन ये इंस्ट्रक्शंस होते क्या. फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया होगा. फॉर्मेट क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होता है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट्स. आप ये देख रहे हो फाइल में फ्रॉम, वर्क डायरेक्टरी, कॉपी, रन, कॉपी, कमांड, ये सारी चीजें वी कॉल देम एज अ इंस्ट्रक्शंस, and whatever passed after that, after space, those are the arguments for that instruction. तो हम अब ट्राई करते हैं to understand the meaning of each of these instructions. From क्या होता है, वर्क डायरेक्टरी, कॉपी, रन,
ये सारी चीजें है क्या. From is something which will give you the base image or the base environment. हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पाइथन एनवायरनमेंट, पाइथन 3.8 3.9 चाहिए था. So we can specify that I need a environment of a Python to run my application. Okay. So as we discussed, dependencies का issue वगैरह सब कुछ solve हो जाता है यहाँ पे. How? For if you say like use Python 3 point some other version 3.8 9 वगैरह कुछ use करो. Okay. I can simply change one tag here 3.9 बना दूंगा and it will run same as it is. Okay. It is that simple. I don't need to install Python 3.9 again in my environment. Just एक change कर दो Docker file में, फिर से build कर दो and इसका काम हो जाएगा. उसके बाद we are setting a working directory of application. Okay. Then हमें एक requirement.txt file लगता है जहाँ पे हम पूरे dependencies वगैरह लिख के रखते हैं. So we are going to copy that requirement.txt from our local machine from this instance जो भी हमारा चल रहा है Docker Labs पे into the Docker image. Once we have the requirement.txt, we are going to run the that command. If3 command हमें run करना है to install the dependencies. तो वो होगा using a run command, run instructions. After that, we are going to copy our application. Copy dot dot. मतलब local में से copy कर लो in the Docker container. Okay. And finally, we are going to put a cmd command. उससे क्या होगा, जो भी command run किया था हमने application run करने के लिए, right? Python -m same ही command है. Python 3-m /. So use Dockerfile. Last 3 commands repeat करने. Okay, sure. Sure. ये एक छोटा सा डॉकर फाइल है. ओके. फ्रॉम से बोलते हैं कि हमें कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए फॉर रनिंग आवर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे हमने बोला कि पाइथन 3.8 का एक छोटा सा एनवायरनमेंट दे दो. वर्क डायरेक्टरी हमने सेट किया /app से /app वर्क डायरेक्टरी फॉर आवर एप्लीकेशन. तो इसमें सब कुछ कॉपी हो जाएगा /app for whatever the commands we are running. Copy. Okay. Copy command. तो copy command से हम क्या कर रहे हैं कि local file जो है यहाँ पे requirement.txt, that file we need in our Docker container, right? Because to run our application we need a dependency, class dependency, we need a application code and we need a Python. तो Python का environment मिला हमें from instruction से. We need a requirement.txt. requirement.txt कहाँ पे, हमारे local machine पे. उसको हमें copy करने पड़ेगा inside the Docker image. तो उसके लिए हमने use किया copy instruction. It will copy requirement.txt from our machine. इस instance से copy करेगा inside the Docker image. Okay. And then we said आपके पास requirement.txt फाइल आ गई. Now you need to install those dependencies. तो उसके लिए हमने कमांड रन किया था pip3 install -r requirement.txt. तो फिर that command we ran using a run command. Okay. And then we copied everything from our local machine inside the Docker image using a copy dot dot. So first this is same like your Linux command. cp command जो हम यूज करते हैं, राइट? cp के लिए एक सोर्स देते, एक डेस्टिनेशन देते. तो ये cp copy something from the source into the destination. So copy from my current directory inside my Docker image, everything copy कर. And cmd instruction से हमारा Docker container start होगा.
तो जैसे सेम लाइक हमने विदाउट कंटेनर जैसे स्टार्ट किया था ये एप्लीकेशन यहाँ पे where it is somewhere here. Hmm, we started our application, right? लोकल पे भी होगा, लोकल पे भी होगा, पाइथन 3-m / run ये कमांड रन किया था। तो सेम कमांड हमने डॉकर फाइल में दे दिया कि जब भी ये एप्लीकेशन कंटेनर स्टार्ट करोगे उस टाइम ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, नाउ दैट इज डन। हमने क्या बोला, डॉकर फाइल लगता है, डॉकर फाइल से बनेगा डॉकर इमेज। डॉकर इमेज बनाने के लिए क्या कमांड रन करना है? सो यू विल नीड टू रन डॉकर बिल्ड -t, एक टैग दे दो, मतलब डॉकर इमेज के लिए कुछ नाम दे दो। यू विल से पाइथन डॉकर एंड यू विल रन दिस डॉकर फाइल जहाँ पे हमारा डॉकर फाइल। So you can see it has started building a Docker image. आपको कुछ layers वगैरह दिख रहे होंगे। So this is the one instructions we put in our Docker file from Docker. उसके बाद हमने pip3 install requirement.txt लिखा था। And all these instructions you can see here. Work directory, copy, run. Okay. तो CMD वाला आप यहाँ पे नहीं देख सकते। So CMD वाला जो last instruction है ना, that is for running your container. नाउ डॉकर इमेज बन गया, ये कैसे कंफर्म करेंगे? देयर इज अ कमांड कॉल्ड डॉकर इमेजेस। सो यू कैन चेक व्हाट इमेजेस आर देयर इन योर मशीन। ओके, डॉकर इमेजेस, डॉकर बिल्ड यूज किया हमने टू बिल्ड अ डॉकर इमेज यूजिंग अ डॉकर फाइल। डॉकर बिल्ड -t से हमने टैग दे दिया, मतलब डॉकर के लिए एक नाम दे दिया, पाइथन डॉकर यहाँ पे आ रहा है, राइट? So that tag you can specify the Docker file using a -f and the dot मतलब current directory। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था copy dot dot, ये जो डॉट है ना, मतलब यहाँ पे हमने बोला कि जो भी करंट फोल्डर में जो भी है locally, that copy everything inside the Docker image and the Docker container। Okay, so that's why we are putting a dot, मतलब current context। Okay, हमारे पास Docker image है, तो हम क्या बोल रहे थे, once we have a docker image हम docker container रन कर सकते हैं। तो docker container कैसे रन करें? docker container रन करने के लिए we have a command called docker run -itb। और आप इसको, आपको अगर लोकल मशीन पे एक्सेस करना है then you will need to do the port binding -p port of the host machine and port of your container, जहाँ पे आपका कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन रन हो। एंड आफ्टर दैट यू विल गिव अ डॉकर इमेज। ओके, सो वी कैन चेक अ डॉकर कंटेनर यूजिंग docker ps कमांड। यू कैन सी हियर डॉकर कंटेनर एक रन हो रहा है हमारा। इट इज यूजिंग अ पाइथन डॉकर इमेज। इट इज रन using a python 3-m / run command जो हमने डॉकर फाइल में आखिरी में लिखा था, this cmd command। okay, and it is listening on port 5050 on our machine। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? कल -f http 127.0.0.1 5050 कर दें, तो हमें हेलो डॉकर दिखना चाहिए, आ रहा है। दिस इज फ्रॉम आवर डॉकर कंटेनर। तो आई एम स्विचिंग बैक। अरे आगे क्यों जा रहे? डॉकर सीएमडी और एंट्री पॉइंट में क्या डिफरेंस है देखेंगे, एंट्री पॉइंट क्या होता है, बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएमडी एंड एंट्री पॉइंट, ऐड एंड कॉपी, सब कुछ देखेंगे। बट इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट द डॉकर कंटेनर?
I already set up Docker environment on Windows as well as Linux. And ठीक है, you can use a Docker playground as well. So इतना क्या है? You just need to create one symbol. Python, how I am using Python? See, I'm not explaining Python code. आपको वो सब कुछ instructions मिल जाएगा from your developers. It's just a simple hello world example. आपको अगर confusion हो रहा है ना, ये हमने Python में क्या लिखा है? I can write another hello world program. एक single line का program लिख देते हैं, ठीक है? Hello world dot py. Python में hello world अगर आपको print करना है, तो आप क्या कर सकते हो? ये कंटेनर एग्जीक्यूट हो जाएगा. You can print message here like this, hello world टाइप कर दो और ये hello world मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. इसको कैसे रन करेंगे? Python 3 hello world dot py. अगर ये रन करता हूँ मैं, then it will print the hello world message. It's just for a demo, okay? It's you can create container. So you may be asking about this run command. इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? इसको बोलते हैं पोर्ट बाइंडिंग. कंटेनर का पोर्ट हम जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है, दैट इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट 5000 पोर्ट पे रन हो रहा है. बट वी वांट दैट टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम आवर मशीन. तो यू कैन गिव एनी पोर्ट जो विच इज नॉट यूज्ड बाय एनी अदर एप्लीकेशन. वो पोर्ट दे सकते हो आप. इफ आई वांट टू रन दिस एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट पोर्ट, I can run the same command. Docker run -p. फर्स्ट पोर्ट आता है आपके लोकल मशीन का पोर्ट, होस्ट का पोर्ट आता है. So I can change it to some other port number as well. Give it port which is not listened by or used by any other program. I can run Docker ps. Okay, now you can access the same application on port number 5060. Hello Docker 5060. Why we write requirement.txt 2 times? From where I got this 5000 port. हमारे जो application का port है, for Flask the default port for your application is 5000. हमेशा 5000 होता है. If you want to change it, you can change it as well. How you will change it? So app.py में you will need to give a port specify करना पड़ता है. I'm not into Flask much. I'll also need to search. But you can change the default port. How does the container get its name? If you don't specify the container name, so by default it will get a name, random name generate होता है. You can see here कि हमारे Docker containers से हमने list किया था using Docker ps command. Silly, Archimedes, Elegant, Austin वगैरह. If you want to give a name to your container, you can use the hyphen name while running your container. जब आप रन करते हो, ओके, हाइफन नेम दे दो और यहाँ पे बोल दो Python 3. और आपको पोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज सेम पोर्ट पे रन नहीं हो सकते कंटेनर्स. नाउ चेक दी डॉकर पीएस और ये हमारा Python 3 नाम आ गया. इफ यू डोंट प्रोवाइड द नेम, बाय डिफॉल्ट डॉकर विल गिव अ नेम टू द कंटेनर्स. Yeah, it's a random name given by the Docker. Elegant, Austin वगैरह जो है.
Py cache, it's Python. Okay, you can skip it for now. Now ये हमारा हो गया डॉकर बिल्ड, जिसको मैंने बोला था कि डॉकर बिल्ड पे फोकस करो. डॉकर बिल्ड इज द कमांड टू रन योर डॉकर इमेज. How much time we have? 15 minutes, so we need to finish it, the remaining part. Okay, it is working now. जो हमारे पोर्ट्स हमने एप्लीकेशन रन किया था ना, these are accessible. ओके, डॉकर दो तीन कमांड से वो अच्छे से याद रखो. डॉकर इमेज बनाना है यूजिंग डॉकर फाइल. डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू वांट टू बिल्ड अ डॉकर इमेज, देन यू विल यूज अ कमांड कॉल्ड डॉकर बिल्ड. डॉकर बिल्ड -t के साथ डॉकर इमेज का नाम दे दो, -f के साथ डॉकर फाइल का नाम दे दो, एंड पुट अ डॉट और द करंट कॉन्टेक्स्ट. करंट कॉन्टेक्स्ट से आपको डॉकर इमेज बिल्ड करना है, दैट्स व्हाई डॉकर डॉट. आपको अगर डॉकर इमेजेस चेक करने, देन यू कैन यूज द डॉकर इमेजेस कमांड. आपको अगर ये इमेजेस हो गए, इफ यू वांट टू डिलीट दिस डॉकर इमेज, यू कैन यूज द डॉकर rmi कमांड एंड गिव अ नेम ऑफ दैट डॉकर इमेज. पाइथन डॉकर ये अलाउ नहीं करेगा because it is being used by the container, so you can't delete it. Okay, but this is the command. हम delete करेंगे इसको, एक बार कंटेनर की कमांड पे देख लेते. So to run a container, you will run a command docker run -itd. itd का मतलब ये है कि we need a some kind of shell or you know the interactive mode of the docker container, and d is for daemon. background में run करते रहो इस कंटेनर को. Hyphen name, you know, is for giving the name to the container. If you don't give it, you will get a default name, something like this, कुछ भी generate हो जाता है. -p is to bind the port, because हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है inside the docker container. Okay, it is running on port, default port called 5000. अगर हमें उसको हमारे मशीन से एक्सेस करना है, then we will need to bind that with the machine port. इसलिए हमने बाइंड कर दिया 507 पोर्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं हमारा मशीन कंटेनर. एंड लास्ट वन इज अ डॉकर इमेज. हमने क्या बोला था, वी नीड अ डॉकर इमेज टू रन अ कंटेनर. सो दिस इज अ कमांड, कंप्लीट कमांड. आपको अगर चेक करना है कि डॉकर कंटेनर्स कौन से, सो यू कैन यूज द डॉकर पीएस कमांड. डॉकर पीएस से आपको सारे कंटेनर्स दिख जाएंगे. इफ यू वांट टू डिलीट द डॉकर कंटेनर एंड फर्स्ट यू विल नीड टू स्टॉप इट. तो डॉकर स्टॉप कर दो. तो ये तीनों कंटेनर हम स्टॉप कर देते हैं. इफ यू टाइप फर्स्ट 2-3 कैरेक्टर्स ऑफ द कंटेनर आईडी, देन आल्सो इट विल वर्क. तो a4 bb एंड 22 स्टॉप कर दिए इन कंटेनर्स को. डॉकर स्टॉप कमांड. ओके, सो एक बार स्टॉप हो गए, देन वी कैन डिलीट, रिमूव देम. नाउ वी कैन चेक कौन से कंटेनर्स है. There is no container running. If you do the docker ps-a, docker ps-a, you can see here container are now in exited state. They are in exited state. We can remove. So to remove container from your machine, you will need to type docker rm and same docker के container के id दे दो. Remove it. Now you can run the command docker rmi to delete the docker image. Python docker. इस बार ये एरर नहीं देगा. हमने पहले किया था डॉकर कंटेनर रिमूव करने से पहले. So it was saying container is using reference image. It was not able to do. इस बार इसने डिलीट कर दिया. चेक करते हैं डॉकर इमेजेस. There is no docker images. इतने 3-4 कमांड से इतना ही याद रखना है आपको बस. और now तो डॉकर फाइल में हमने 3-4 इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, बट उसके भी अलावा देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर देयर व्हिच वी कैन राइट इन अ डॉकर. फ्रॉम से पता चल गया. फ्रॉम का आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अभी क्लियर है. वी गेट अ बेस और पैरेंट इमेज, मतलब जो हमें एनवायरनमेंट चाहिए. अगर पाइथन का चाहिए तो हम
फ्रॉम में पाइथन लिख देंगे, उबंटू चाहे तो उबंटू लिख देंगे। env यू कैन यूज इट टू सेट अप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आपके एप्लीकेशन के लिए अगर कुछ एनवायरनमेंट लगता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लगते हैं, देन यू कैन सेट देम यूजिंग env इंस्ट्रक्शन। हाँ, दिस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ऐड एंड कॉपी के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड एंट्री पॉइंट एंड सीएमडी के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, ऐड से क्या होगा, हमने कॉपी यूज किया, देयर इज कमांड कॉल्ड कॉपी एज वेल। सो कॉपी से क्या होता है, वी कैन कॉपी द फाइल फ्रॉम आवर लोकल मशीन टू द डॉकर इमेज, इनसाइड द डॉकर इमेज। कितना पता चल गया, बिकॉज वी कॉपीड वन फाइल, requirement.txt फाइल हमने कॉपी किया था फ्रॉम आवर मशीन इनसाइड द डॉकर इमेज। बट ऐड आल्सो डज द सेम थिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ऐड कैन कॉपी फाइल और डायरेक्टरीज, बट इट कैन आल्सो डाउनलोड द रिमोट रिसोर्सेज। आपके इंटरनेट पे कोई रिसोर्स होगा ऑन गिटहब, या फिर यू वांट टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम पैकेजेस फ्रॉम इंटरनेट, दैट इज पॉसिबल विद द ऐड। कॉपी सिर्फ लोकल कॉपी करने के लिए देता है। यू कैन कॉपी लोकल फाइल्स और द डायरेक्टरीज inside the docker image using a copy instructions, but add के साथ you can copy or the download resources from internet as well. Okay, and yeah, if those resources are in zip format या फिर tar format रहेगा, then it will extract as well. अगर आपने कुछ फाइल कॉपी कर दी using a add command which is in .tar, okay, compressed format है, then it will extract that file inside the docker image, but copy ऐसे नहीं करेगा, copy will keep as it is। अगर आपने .tar फाइल कॉपी किया है from your local machine, तो आपके कंटेनर के अंदर भी वो tar ही रहेगा until unless you extract using some other command। तो expose is for the documentation, ये port expose नहीं करता, it only tests the person who is building a Docker image, which port is used inside the Docker container application to run that server or application. It doesn't do anything. It's just for helping the developers who is building the Docker image. Okay, ये question पूछा था आपने, what is the difference between entry point and the CMD? So both of the commands help us to run a container, entry point या CMD. Okay, but the best part is you can use either CMD or you can use the entry point. When you use both the commands, both these instructions, entry point भी use करे और command भी use करे, so this gets combined, एडिशन हो जाता है या फिर अपेंड हो जाता है। जो भी कमांड आपने एंट्री पॉइंट में दे दिया है, लेट्स से दिस इज अ कमांड यू हैव पुट इन एंट्री पॉइंट एंड दिस अ कमांड यू हैव गिवन इन अ सीएमडी, so the final command will become like this। इसका कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट एंट्री, p1 एंट्री एंड जो भी आपने लिखा है सीएमडी में, इट बिकम्स अ आर्गुमेंट फॉर द एंट्री पॉइंट। अभी कुछ न्यू लर्नर्स है, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज देम, गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। या सो कंसीडर एंट्री पॉइंट अगर आप यूज करें एंड सीएमडी भी यूज करें, तो दोनों कमांड का कॉम्बिनेशन, मतलब ये अपेंड करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस बनेगा, दैट विल बी यूजफुल टू रन योर कंटेनर। इससे कंटेनर स्टार्ट होगा। दिस कमांड यू कैन ओवरराइड फ्रॉम अ रन टाइम। जब आप डॉकर रन करते हैं उस टाइम दिस यू कैन ओवरराइड, एंड दिस आल्सो यू कैन ओवरराइड using a entry point option। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, we are going to keep it shorter। okay, there are few more instructions in a docker file which you can use। work directory, it sets a working directory for this commands जो हम कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करते टाइम हमने डॉट दिया था, राइट, कॉपी डॉट डॉट। so which means we want to copy something from local machine to the current directory। current directory हमने कौन सा सेट किया था, we set the current directory using a work directory option। run helps us to execute the command। लिनक्स कमांड्स रन करने के लिए या फिर कोई भी कमांड रन करने के लिए we
can use a run. And similarly, there is label to set a metadata information. Label to you can use a user to set a container user या फिर user ID. Health check करने के लिए you can use a health check as well. Okay, ये सारी है commands. ये हमने देखा है how to build a Docker image using a Docker build. तो पहले आएगा Docker build with a hyphen t you will give a Docker image name. hyphen f के साथ आप दोगे Docker file का path and build context. आपको कहाँ से Docker image build करना. The next thing is Docker run. Docker run command use करके you can run a container. Docker hyphen itd इससे होगा आपका container will run in an interactive mode and in a background mode. With a hyphen name, hyphen name, you can give a container name. Otherwise, it will get some random generated name by Docker. And main thing, image name देना मत भूलना, because to run a Docker container, you need an image. So ज़्यादा time नहीं है हमारे पास. We are over the time. So quickly, let's go through. Yeah, quickly go through some questions which you can expect. मतलब आपको थोड़ा idea लग जाएगा how questions may look like in a CKD exam. Okay, so I got this question somewhere from internet for CKD practice exam. I'll share more such questions. Okay, so you can expect a question to write a Docker file to build a Docker image and then to create the container from the Docker image. So create a Docker file, save the file in the directory. ऐसे कुछ directory में save कर दो. And then you should use the Alpine image. Alpine image use करने के लिए बोला है. तो हमने एक instruction सीखा है from. तो इसका मतलब you need to use a from instruction to build this image. Okay, from में आएगा Alpine with the command echo hello Linux data hub. तो कंटेनर रन करने के लिए you will use a command called echo hello. तो CMD में आ जाएगा ये सब कुछ instruction. You can use the array format. Array format में you will give a echo hello ऐसे. So I am going to share this assignment for you. आपको अगर समझ में आया होगा ये session, then you can write it. Otherwise, we'll see in our next class. Okay. ऐसे करके you can set a Linux this command to run a container. इसके बाद ये क्या बोल रहा है? Build the image and export it in OCI format to a file with the name Linux Docker and tag should be 9.8. Okay. So there are few more commands which we are going to see. Yeah. Yeah, we will see a few more commands about the Docker container and the image, and we'll also solve this question. अगर आपको इसका आंसर पता है, then you can submit the answer, or we will see this question in the next class. Okay. Similarly, you can expect this kind of questions. तो इसमें क्या बोला है? Create a container from the attached Docker file. आपको एक Docker file दिया होगा and एक index.html file दिया है. They are saying to create a image called my image. एक image बनाना है. आपको पता है कि command क्या है. Docker build करो. आपको एक Docker file दिया है. So to create image, we will use a Docker build command. और ये बोल रहा है that run the container exposing port 8080 on the host and the port of 80 is for the container. तो जब container run करने के लिए हमारे पास command है Docker run. राइट. और ये बोल रहा है कि एक्सपोज दैट कंटेनर. होस्ट पोर्ट क्या है? फर्स्ट आता है होस्ट पोर्ट 8080. कंटेनर का पोर्ट क्या है? 80. तो हाइफन पी के साथ ये वाला ऑप्शन दे देंगे. एंड देन दे आर सेइंग यूज द नेम ऑफ द कंटेनर एज माय कंटेनर. ये वाला ऑप्शन के देखा हमने, हाइफन नेम, और इसके साथ आएगा कंटेनर का नेम जो भी दिया है. देन they are asking us to stop that container. Docker run कर दिया, stop भी कर दो and delete the container. So you may expect such kind of questions related to Docker, to create a Docker image from a Docker file, or to write a Docker file, to create a Docker image, to
to start a Docker container from an image or to run a container from an image. Okay. Any questions in this? ये वाला questions हम कल देखने वाले हैं because they are OG time. Books. Okay. Yes, I'll share one GitHub link. I'll post some assignment related questions and you can submit your answers there. This will not be counted for the scholarship because we need to see the few more commands, and tomorrow I'll give a question for the assignment. Okay. Yes, I'll check the all questions. I can check the questions. If you have any questions, just let us know. Yes. Yeah. Thank you. Do you want to hear about the scholarship? क्या है? What is the scholarship? How you can reach out to me? We have a group created. Okay. Yes. Yeah. So quick overview. Just recap of the scholarship tracks. What we are doing. Okay. Live sessions तो है ही, but apart from that, I want to help students and people who got recently laid off with some kind of scholarship or some kind of help, along with the live sessions with by providing some more help. Okay, so we have two tracks. One is session scholarship and one is session scholarship. So session scholarship
मतलब क्या it's we are going to announce this session scholarship at the end of every weekend मतलब जब एक sessions होंगे after every session weekend session and we also have the series session ये जब you know when this entire series will end we will announce some series scholars as well. So the rewards for the session scholarship is free entry in my next DevOps batch. So you might know that I also teach the entire DevOps from scratch, from Git, Linux, Docker, Kubernetes up to the advanced help, Cilium वगैरह बहुत कुछ सीखते हो आप यहाँ. That's a paid batch, but you can get into that DevOps batch free entry and one-on-one mentorship from our moderators and from me. Series scholarship भी है that we are going to announce at the end of this entire CKD series. So you can get up to 50%, 200% discount for the CKD exam. And you know the price 395 USD. That's a huge amount, right? So हर किसी को afford नहीं होता, but we are going to help with that if you win this series scholarship. Okay, some goodies, Kubernetes t-shirts, and also free entry in DevOps badge and some surprise goodies. Okay, what is the selection criteria? So you need to start writing the blogs on any platform, whichever you are preferred, whichever is your preference. Hashnote, LinkedIn newsletter, or Medium, कहीं पे भी लिख दो. Timely completion of the assignments and the given task, because I want you to clear the CKD exam by the end of this series. जब हम series खत्म करेंगे, you can enroll for the exam, and I want you to clear this exam. तो उसके लिए practice बहुत ज़्यादा important है, and completion of these assignments, timely assignment, are going to help you. You can write a blog, because blog writing के time आपको पूरा clear हो जाएगा what your doubts get clear. Helping other community members, we are going to observe all our Slack, our WhatsApp group charts, moderators देखने वाले की who is helping whom, and also we also want to grow with this initiative. We want to share our knowledge and this kind of the free sessions with uh, not many people, not only 500 people. So, okay, so you can share your learnings with on social media, on LinkedIn, Twitter, and you can use these three hashtags. So we are going to monitor these three hashtags to see your performance and your activities on social media. You can tag our moderators and you can tag me. Session scholarship, as we discussed, session के बाद वो announce होगा, and series scholarship at the end of CKD series announce होगा. So some session तो है ही, but we are going to do more with this. Yeah, we are going to we will upload this session recording on our Graphy platform and on YouTube as well, so you can go through anytime. I don't know what Rushikesh is trying to help with. Okay. Okay, you have not written any blog before. कोई problem नहीं. I take extra session, not in this series, but maybe tomorrow I'll share one link. If you are available and if you are interested to learn about the blogging, so I'll share one link. You can join there. Yes. Yeah, thank you guys. Any more question? Okay, I also got a few queries कि student के case में क्या होगा. So for student we are going to moderate it separately, because I know you guys have the exams. So your activity will be monitored. If you are active from right now, that is good and well and good. And if you have the exam, just let us know that you are giving exam, and you can start participating in the activities, scholarship track activities, only after completion of your exam. So let us know the dates so we can track your social media activities and other things. Yeah, series coupons should be
Ah, you can set goal. Anything for learning to Python? Yes, please do that for writing a blog. Docker के लिए I'll release another series because teaching Docker in 2 hours is a huge job. It's not possible. So I'll release one free series to teach a Docker in depth. थोड़ा टाइम लगेगा उसको. Python के लिए भी आएगी. सब कुछ फ्री में होगा. Where to submit assignments? कल डिस्कस करते हैं. कल tomorrow I'll share one GitHub link, and there we will post assignments regularly. You will need to submit the assignments on your repository. देखते हैं. Okay. Yeah, sure. This project and assignments we are going to upload on GitHub. Yes, so you can share the word about our session. You can and this pre-CKD series, so more people can join us. Okay, thank you. Yes, thank you everyone for joining on weekend. आपने इतना टाइम दिया. Thank you. Terraform की सीरीज भी आएगी क्या? हाँ, अभी तो टारगेट है to get a fully certified Kubernetes certified. Let's see if I get some time. Terraform भी कर लेंगे. Yes, recordings as we said, YouTube and graphic platform. You can see the recordings there. Thank you. Thank you. And don't worry, tomorrow again we are going to spend some time to revise the Docker concept. उसके बाद कुछ बच्चे commands है that we are going to revise again, and then we will move for the Kubernetes. Okay. Tomorrow session timing is same. Weekend का time हमारा same रहेगा from 8:30 to 10:30. थोड़ा बढ़ सकता है. It can go to 11, but timing is same. Starting timing 8:30.
For CKD, Docker Compose is not required, so that we are going to skip in this session. Okay, guys, I'm going to stop the recording. I'll upload it soon, and you can go through the recording. If you have any questions, you can start sending those questions on our group, WhatsApp group पे भेज देना. No, Docker Swarm, Docker Compose is not required. Only Docker file creation, Docker image. जितना हमने discuss किया ना, that is the only thing we need in our CKD. Yeah. Okay. Thank you, guys. Enjoy your weekend. Bye.